We are in Mumbai's RA forest. This is the last surviving natural forest inside a megacity in the world. Imagine RA is this little ice cube in the middle of this heat island, and it's keeping the whole city cool, but the city really doesn't understand, and the city is kind of closing in. ये आरे जंगल है, इसी में हमारा सब खेतीबाड़ी है और इसमें हम रहते हैं। जंगल के साथ हमारा नाता है, हम जुड़े हैं और खेले बड़े सब जंगल में ही हैं। मेरा नाम वनिता राजेश ठाकरे है। मेरे एरिया में तो आदिवासी लोग हैं, सब वारली बोलते हैं हम लोगों को, और मेरा सब नॉलेज तो जंगल के ऊपर ही है और इसके ऊपर ही हम काम करते हैं। I'm Sanjeev Valsan. By profession, I'm a photographer, and I am also a travel writer. And by passion, I'm a conservationist. All the old knowledge that's worth preserving, I am into that. The thing about Adivasis and forests is that they are very permanently linked. More than the utilitarian things, it's also a sense of identity, because their gods are all forest deities, like Vaghuba, who is the leopard deity, and the chlorophyll deity, who's all around us right now, who's called Hirvadev. शहर के लोगों को कैसे मतलब यहाँ का पता नहीं है, जो मतलब जंगल में क्या मिलता है, कैसे सब्जियाँ होती है, कि खाना क्या होता है, आदिवासी लोग क्या क्या खाते हैं। They use wild foods for personal consumption during various seasons, and not only that, they also sell stuff from the forest, which has a lot of demand in the markets. जब हमारी पीढ़ी गई है इसमें सब दादा दादी से, तो हम छोटे छोटे बचपन से उनके साथ जंगल में घूमते थे, और वो घूमने से हमें पता हो गया कि क्या हमारे मम्मी पापा खाते हैं और क्या मतलब ऑर्गेनिक है और क्या जहरीला है, क्या नहीं जहरीला है। इसके वजह से हम लोग ये मतलब खाते हैं तो इसको आसान बोला जाता है। इसमें छोटे छोटे फल आते हैं, वो भी पकने के बाद खाते हैं। कैसे जंगल में तो अभी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सेवला बोलो, कंटोली बोलो, बहुत सारा अम्बाड़ी बोलो, ये सब मतलब हमें मिलता है और ये सब हम खाते हैं, और हम लोग जंगल के बिना नहीं रह सकते। ये पलस का पेड़ है, हम आदिवासी के लिए ये पेड़ बहुत महत्व है। इसमें कैसे अभी पत्ते आ जाते हैं तो इसके फूल हैं, सो इससे चाय बनाई जाती है और उसके पत्ते में खाना परोसा जाता है, उसमें हम खाना खाते हैं। जैसे हमारे में क्या है, पलस चाहिए, बच्चा पैदा हो जाए तो पलस का पत्ता चाहिए, मर जाओ तो पलस का पत्ता चाहिए, शादी करो तो पलस का पत्ता चाहिए। ये पत्ते के बिना शादी नहीं होती, ऐसे हमारे आदिवासी का रिवाज है। ये दीना के दो वैरायटी हैं। ये जो पत्ता है लंबा है, एक का पत्ता है वो गोल टाइप आता है। अभी इसमें फल आ जाएंगे, ये काला कलर का होएगा वो, तो तभी इसके फल खा लेने के। अम्बाड़ा बोलते हैं इसे। ये पत्ते से सब्जी बनती है, इसका कच्चा पत्ता भी हम खा सकते हैं। ये भोकर का पेड़ है, पेड़ पहचानने जाओ तो ऐसे सीन आती है उसमें। फल जब आते हैं तो उसका अचार भी बनता है, या इसे भी हम लोग खाते हैं। बम्बू के कोम आ जाते हैं, कवले वाले जब होता है तब हम निकालते हैं, तो उसका अचार बना सकते हैं, उबाल के सब्जी बना सकते हैं। ज़्यादा साल के रहेगा ना, उतना टेस्टी हो जाता है। ये कंद है, इसको जब मतलब लगाया जाता है तो 1 साल में तो उसका फल आना चालू हो जाता है। तो अभी ये जैसे है तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, जो इसमें लग जाते हैं, ऊपर लग जाते हैं। नीचे भी है जो इतना बड़ा होगा, 4-5 किलो का निकलेगा। अब इसको 7-8 साल हुए हैं। ये है कौन, इसके पत्ते में जो है इसमें रोटी बनाते हैं हम लोग। तो अभी इसमें जो है चावल का आटा भरा जाएगा, फिर चावल के आटे से उसे पैक किया जाएगा ऐसे, और फिर ये उबाल के हम लोग खाएंगे। अगर हम 4-5 साल रखें तो इसको 20-30 किलो 70 किलो ऐसे निकालते हैं। Tubers are a very interesting thing, because during the high season for wild foods is when you don't have tubers. Okay, so that's the monsoon. The tuber season is in fact in the dry season, so they kind of balance each other out. So this is Takla Cassia Tora,
and most people prefer the more tender leaves. However, at this time of year, when you see this yellow flower, is when you shouldn't be eating it because the chemistry of the plant changes. Many plants like takla and kurdu, which are found in this forest, you can only eat them before they flower. It's like we all take shifts, you know. It's first the humans who get to eat the leaves, now it's the bees and the butterflies who come and get the nectar. These are called air potatoes because they kind of grow in the sky. So they grow on these vines that climb on top of these trees. Their approach to sunlight is very different from market potatoes. Like market potatoes ask for you to cut the trees so that they get sunlight. What this one asks you to do is to plant it near a tree so that it can climb the tree and get sunlight, and also share a bit of its sugars with the tree and share a bit of its microbes with the tree. So this is basically symbiosis versus parasitic agriculture. संजीव अल्सन जो है उनकी जो मतलब ट्रस्ट चलती है, उन लोगों के थ्रू से हम लोगों को मतलब पेड़ दिए जाते हैं जो आमदनी वाला हो. We started teaching city people how to plant trees. We started teaching students how to plant trees, and these became like tree plantation workshops. And then we started collaborating with the Adivasi community. So we asked them what trees they would like. जैसे आम के हुआ, जामुन के हुए, जो है मोहा के झाड़ हुए, बहुत सारे पेड़ हैं कि वो लोग मतलब आके खुद से भी लगाते हैं. तो क्यों लगाते हैं? हम लोगों की मतलब आमदनी बढ़े प्लस वो जंगल रहे जैसे के वैसे. When we plant a mahua tree, we know that the mahua is going to feed lots of birds as well. It's not just going to feed humans. Likewise, when we plant a lemon tree, of course the lemon tree requires very little water, but we know that also is very important for what we just saw flying from here, which is the blue mormon, which is the state butterfly of Maharashtra, which is attracted to citrus. Sapling care is about, of course, surgical stuff like this. If you come back to see what you planted, then you get to learn your mistakes. And if you don't come back, you'll think you've saved the earth, but you haven't. It's in the nature of creepers to creep, right? So they just do their thing, and it's in the nature of humans to care for mahua. So we also do our thing. In this particular case, the mahua leaves have gone a little red. That indicates that it's on its way to getting independent with its root system. We need to plant a lot more mahua in Aarey because mahua belongs in Aarey. It's the rightful place for this amazing tree. संजीव के साथ ये सब हम मिलकर मतलब काम करते हैं, जैसे पेड़ पौधे के हुए, खाने के हुए, ये सब हम लोग काम लेते हैं और काम ऐसे अच्छे तरह से करते हैं क्योंकि जितना मेरा नॉलेज है उसमें उसका नॉलेज है, वो दोनों मिला के हम साथ में बहुत अच्छे काम करते हैं. Now, what Vanita and I realized is that we have a lot of objectives in common. We both wanted what's best for Adivasis because we wanted to protect the forest. We wanted to work with wild food. We saw that all this had the potential for being scaled up, and it needs to be scaled up. So we organized ourselves into an NGO. Our NGO is called Waghoba Habitat Foundation. So about 5 years ago, Vanita and I was sitting and we were brainstorming about what we could do. Then I proposed this idea about the wild foods, where tribal people can earn a livelihood by teaching city people about what they know about coexistence and nature. तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सीखने भी आते हैं, मतलब जो हम खाना बनाएंगे वो खाने भी आते हैं, जो पेड़ की सब्जियाँ खाएंगे वो पेड़ हम दिखाते हैं पहले उनको, मतलब हम लोग क्या क्या लगाते हैं, कैसे उनको सिखाते हैं, खाना कैसे होता है, खाने में ऑर्गेनिक क्या है. And by the end of it, what happens is that people have a very strong appreciation for the cultural and knowledge assets that the Adivasis have.
Imagine that many generations ago, there were about 5 people, and each of those 5 people tried a new herb. The ones who tasted something good passed down their knowledge. The ones who tasted something bad maybe didn't live to, or maybe they did. This knowledge is passed on and tuned from generation to generation, which makes it really valuable. And this entire matrix of knowledge, which is bound with knowledge about architecture, knowledge about the forest, knowledge about medicine, all these things put together is what we call traditional ecological knowledge. For this knowledge to stay alive, people have to continue engaging with the forest, and for that, that forest has to exist.